Hello. Okay, let few people build up E2 process में कितना टाइम लगता है? Hello, everybody. I know it's very late in most parts of the world, but just थोड़ा सा क्विक चिट चैट के लिए लाइव आए हैं. कैजुअल चैट होगी, कैजुअल गपशप होगी. ओके, तो जी जल्दी जल्दी से बताइए जी क्या क्या सवाल हैं. थोड़े थोड़े से सवाल शुरू कर लें. जस्ट गपशप होगी, सवाल होंगे अगर आपके कोई क्विक से क्वेश्चंस हो. हाय, गुड मॉर्निंग जी. Are you in Chicago? नहीं जी, I am in Virginia, in DC area. I'm not in Chicago. अच्छा, we will be putting the link also जी. YouTube पे, Facebook पे, सब जगह पे लिंक भी ऐड कर देंगे जी. अगर आपने कोई सवाल लाइव कॉल ज्वाइन करके भी पूछने हो तो you can actually come live on the call and ask me the question. So whatever you want to. Okay. कहाँ कहाँ से लाइव हो रहे हैं जी? आप अपने थोड़ी सी ऑडियंस बिल्डअप हो ले, फिर देन यू कैन इफ लेट मी नो योर एरियाज. जी लिंक आ गया है जी. फेसबुक पे भी आ गया. एंड देयर इज अ लिंक ऑन द यूट्यूब. एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन द लिंक, आप लाइव कॉल को ज्वाइन करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जी. E2 प्रोसेस का टाइम बता दें, कितना टाइम लगेगा टोटल जी? ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेसेस, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स यू वांट टू डू. बट एवरेज 6-7 मंथ्स में सारा प्रोसेस हो जाता है.
सज्जाद साहब हैं जी, हेलो सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बिजनेस, आफ्टर दैट आई लुक फॉर आइल्स जीटी स्कोर 5.5, आई एम able to arrange around 50,000, so can I qualify? Everybody who can arrange the money ji, he's qualified. $50,000 Pakistan से आज की डेट में it's very hard, very tough. I would not recommend. I would say rather you build up some more cash, थोड़ी सी सेविंग और बढ़ाएं ताकि आप $1 लाख तक की अमाउंट जो है वो रेडी कर लें, एंड देन यू कैन एक्चुअली अप्लाई. पाकिस्तान से 1 लाख से नीचे इस वक्त इट्स गेटिंग वेरी रिस्की. Sir, E2 independent will need HB1 visa to go for a green card route, or he can directly take sponsorship from the company. Okay, E2 dependent, independent E2 dependent can go directly to the green card route if they don't need H1B visa. H1B भी जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीजा है, तो H1B भी ग्रीन कार्ड पे डायरेक्टली नहीं जाता, बट यू कैन गो लाइक EB3 पे भी आप जा सकते हो, EB3 से डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पे मिल जाएगा. सर, ब्रिटिश सिटीजन कैसे अमेरिका सेटल हो सकते हैं? जी, ब्रिटिश सिटीजन भी E2 से ही अमेरिका सेटल हो सकते हैं. अमेरिका के लिए आपको जो है वो यहाँ पे चाहे अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, कहीं से भी आप या किसी भी यूरोपियन कंट्री से हैं जिनकी ट्रीटी साइंड है, तो ऑफ कोर्स आप उस E2 की बेस के ऊपर यहाँ पे मूव कर सकते हैं. Okay, which business is good for E2, and secondly, how much we will transfer to the escrow account? जी, which business तो वही अच्छा है जो आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, जो बिजनेस आपको आता है. जैसे हर तरह का इंडस्ट्री है. एक डॉक्टर है तो उसके लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री अच्छी है. डॉक्टर को अगर मैं गैस स्टेशन का बिजनेस लेके दूंगा तो वो बेचारा डूब जाएगा. बिजनेस भी चांसेस ये हैं कि ज्यादातर लॉस में चला जाएगा. तो जो आपका एक्सपीरियंस हो, जिस चीज की आपकी एक्सपर्टीज हो, वही बिजनेस जो है वो आप उसको कंटिन्यू करें तो दैट वुड बी गुड. एंड हाउ मच मनी टू ट्रांसफर टू एस्क्रो? एस्क्रो अगर आपका सेलर जो है वो एस्क्रो के लिए एग्री कर गया तो फिर आपको जो बिजनेस की जो टोटल अमाउंट है वो आपको एस्क्रो करनी होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट है. सर, E2 पे ग्रीन कार्ड मिलता है? नहीं जी, E2 पे ग्रीन कार्ड नहीं मिलता जी. E2 नॉन इमिग्रेंट वीजा है, और E2 आपके लिए रास्ते ओपन करता है, डोर्स ओपन करता है, जिससे आप फ्यूचर में ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हो, बट E2 इटसेल्फ जो है वो ग्रीन कार्ड पे नहीं जाता. जी, आज जो कि कैजुअल सेशन है, तो जस्ट टू रिमाइंड अगेन, जाके जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप लिंक्स जो है वो यूट्यूब, फेसबुक पे दोनों जगह पे लिंक्स मौजूद है. इफ यू क्लिक ऑन द लिंक, आप मेरे साथ लाइव कॉल में, वीडियो कॉल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली आप फेस टू फेस बात कर सके, डिस्कशन कर सके. अच्छा, आप लोग अपने सिटीज जो है वो भी बता दीजिए जी, कहाँ कहाँ से सिटीज और कंट्रीज, किस कंट्री से कहाँ से जो है वो ट्यून इन कर रहे हैं. दैट विल गिव मी अ गुड आइडिया. EB3 आंसर दिया आपने. कितना टाइम लगेगा यूरोप से यूरोपियन नेशनल के लिए? जी, EB जो अगर आप H1B की रिप्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो H1B की जगह पे आप EB3 भी कर सकते हैं. ओके जी, उस्मान आदिल साहब आए हैं. आई एम कंफ्यूज फॉर हाउ मच ड्यूरेशन टाइम वीजा इज guaranteed to Pakistani citizen. Okay, if I understand your correct answer, your question correctly, Usman, आप पाकिस्तानी सिटीजन की वीजे की गारंटी अगर नहीं पूछ रहे, गारंटी आई एम श्योर यू डोंट मीन गारंटी, बिकॉज नोबडी कैन गिव एनी गारंटी टू एनी वीजा. लेकिन जो है वो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ग्रांटेड कितने टाइम के लिए होता है, तो E2 वीजा का जो फर्स्ट वीजा है वो 2 इयर्स के लिए होता है पाकिस्तान के लिए मोस्टली, और द रिन्यूअल इज अप टू 5 इयर्स. फरहान पीटीआई साहब हैं. भाई, क्या क्रिप्टो इंडस्ट्री में E2 का कोई चांस है? क्रिप्टो इंडस्ट्री में E2 आप कैसे करोगे? क्रिप्टो इज जस्ट योर पैसिव इन्वेस्टमेंट, दैट्स नॉट योर बिजनेस. ठीक है, वो आप अपनी, आपकी साइड हसल है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप वो करते हो, लेकिन इट्स नॉट योर एक्टिव बिजनेस. सर, स्पॉन्सरशिप जॉब इजी मिल जाती है यूएसए में? जी, इजी तो कुछ नहीं मिलता जी. इतना इजी होता तो पूरा अमेरिका जो है वो स्पॉन्सरशिप दे देता, बट ऑफ कोर्स यू फाइंड इट डिपेंड्स आपका क्या प्रोफाइल है. आप अपने अच्छे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कनेक्ट कीजिए, तो यस, यू मे फाइंड इट, व्हाई नॉट.
व्हाट इज द वेट टाइम फ्रॉम पाकिस्तान एंड हाउ टू चेक टाइमलाइन? वेट टाइम जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त कराची एम्बेसी तकरीबन 3 से 4 महीने ऑन एवरेज ले जाती है आफ्टर द सबमिशन। Okay, Ji, how we know that the whole transaction will be safe? Oh, that's a $1 million question, Ji. See, the only way you can know that you are safe is to make sure that you are dealing with the professional companies. You are dealing with the you have a multiple layers into the transaction. आपके पास professional brokers हों, real estate agents हों, real estate brokerage firms हों, आपके पास professional consultant, professional attorneys, immigration attorneys. Based on the company's reputation, you can get the thing safe. लेकिन अगर आप ये बोले कि जी आपकी मनी सेफ्टी इसके अलावा, I mean, I don't know what do you mean by safety? What kind of safety are you looking into? राहील फयाज साहब, ये तो कोई मेरे ही हम नाम है जी, राहील साहब। If I already have the seller and I am the buyer, how much do you charge for your service to get the visa done? Other than the business cost? जी, we do not charge business cost जी। हम लोग तो, हमारा काम तो सर्विस प्रोवाइडिंग का। आपके पास बायर है, सेलर है, सब कुछ होगा, बट हमें वो बिजनेस की इवैल्यूएशंस करनी होती हैं उस बिजनेस को। उसके अलावा आपकी जो सोर्स ऑफ फंड्स है उनको इवैल्यूएट करना है, बिजनेस प्रोफाइल्स क्रिएट करने हैं, बिजनेस प्लान क्रिएट करना है। दैट होल थिंग्स गोज इन अ सेपरेट थिंग। तो उसकी फीस जो है वो यू कैन टॉक टू माय टीम एंड दे कैन एक्सप्लेन यू व्हाट फीस वी चार्ज डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल्स। Okay, Ji. If you are in USA on F1 and want to change to E2, you also need $100,000 or less. जी, यूएस में हो या यूएस से बाहर हो, बोथ वेज में इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिमेन सेम व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं तो 100,000 से कम वाला बिजनेस जो है वो भी लेके आए, यू कैन वर्क, इट कैन वर्क। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल 60, 70, 80,000 में अगर आपको कोई बिजनेस मिल जाए, तो आप यहाँ पे लोकली मौजूद हो F1 पे, तो आप उसको स्टेटस चेंज कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको बिजनेस मिल भी जाए तो लेस देन 100,000 का बिजनेस इज नॉट रिकमेंडेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Can brother and sister get E2 visa for the same business with 50-50 shares? Yes, you can. He'll Fiaza, what is the best phone number to call you? The +1 888 9911 786. That's my board line number. और इसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये स्क्रीन पे आ रहे हैं, पूरे नंबर सारे स्क्रीन पे रन हो रहे हैं। यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दोस। व्हाट्सएप नंबर भी है, बोर्ड लाइन नंबर भी है, ईमेल, वेबसाइट, एवरीथिंग इज देयर। And if you want to have a Pakistan number, then there will be on the screen now. Yeah, here you go. तो आप पाकिस्तान के नंबर्स पे भी राब्ता कर सकते हैं। Okay. Can I and my brother get E2 visa for the same business like he and me will invest 60,000 each? Yes, you can. But depending on the business is, yeah, but mostly two partners are allowed for an E2 business. Two partners are allowed. We do not usually recommend for the family members to become partners, but you can actually, legally speaking, you can do. Usman Adil Saab hai, can we apply from another consulate around the world as a Pakistan citizen, because from the Pakistan wait time is long and we cannot even do premium processing? Yes, you can apply from, there are a couple of consulates, जहाँ पे आप apply कर सकते हो, as long as you have the visitor visas or the resident visas of that country. Most likely you need to be the, for example, दुबई में, पाकिस्तान के बहुत सारे हमारे clients हैं जो दुबई से apply करते हैं, but you need to be a Dubai resident for that. इंजीनियर अब्बास साहब ने पूछा जी, सर a lot of fake agents are sitting in the market, so how we can trust on them? Of course you don't need to trust on anybody. I mean, naturally there are fake agents, there are the people all over the world, and वो कहते हैं जब तक जो है वो लालची जिंदा है तब तक जो है वो नौसरबाजों की दिहाड़ी लगी हुई है।
तो देर आर ऑफ कोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको यू नीड टू, देखो तो बड़ा सिंपल है जी, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, लेजिटिमेट प्रोसेस हो, ठीक है। एजेंट किसी, चाहे वो हम जैसे कंसल्टेंट्स लाइक मी और अटॉर्नीज और एजेंट्स इन सिटिंग इन पाकिस्तान, आपको इफ एनीबडी टेल्स यू दैट दे कैन क्रिएट सम प्रोसेस which is not legitimate under the table deal, या उनकी कोई जुगाड़ है सेटिंग है, that's a first red flag। मल्टीपल रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। तो आपका प्रोसेस जो है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। जो भी बंदा जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो आपको वो बात बता रहा हो जो ऑफिशियल है, जो लीगल है, ठीक है। और ऑफिशियल लीगल आपको कैसे पता पड़ेगी? यूएससीआईएस की वेबसाइट से। द ओनली लेजिटिमेट सोर्स इज यूएससीआईएस की वेबसाइट। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ऑफकोर्स फिर वो एक पूरा फैम का पूरा लॉ है वो आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो आपको लीगल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज फर्स्ट गुड थिंग। सेकंड, आपने देखना है कि उस लीगल एक्सपीरियंस के ऊपर व्हाट एक्सपीरियंस डज दैट पर्सन हैव। अगर उसके पास उसकी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, उसने उसी बिजनेस के ऊपर उस मॉडल के ऊपर काम किया हुआ है और वो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली काम करता जा रहा है, देन ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग। द थर्ड इज द रेपुटेशन, देन यू बिल्ड अप उसकी, कि वो आपको कहीं पे किसी पर्सनल कॉल पे तो नहीं, आपके जी ये बातें मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा या व्हाट्सएप पे नहीं बता सकता, मिल के बताऊंगा, ये आप किसी को बताइएगा नहीं, ये मेरी आपकी वन टू वन डील्स, दैट दोज आर द रेड फ्लैग्स। अवॉइड दोस्त जो है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो पब्लिकली, ये जैसे मैं आपके साथ फोरम पे बैठ के पब्लिकली बात कर रहा हूं, आप सवाल पूछे मैं आपको पब्लिकली जवाब दूंगा। So those kind of transparency is something which you need to build up. Company reputation देखें, उसकी social presence देखें, you will find good person. Can F2 visa holder change to E2 status? जी बिल्कुल, F2, F1, F2 can be changed to the E2. Any news about Islamabad resuming E2 service? No, there is no news. There is no current update. We don't expect it to resume anytime soon. Keeping in view the current situation in America, is it a right time for EU citizens to apply for E2? Oh, Anwar Haksab, great question. So first thing is when you say keeping in view the current situation in America, what do you mean by current situation? क्या हो गया अमेरिका को? अमेरिका की इकोनॉमी खराब हुई है, डाउन हो गया है, मार्केट खराब हो गया है, बिजनेसेस बंद हो गए हैं, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। I mean, as long as the small businesses, small industries are running and operating, we are the backbones of the country. We run and operate the country. Honestly speaking, so we are the backbones. तो स्मॉल बिजनेसेस की तो अमेरिका की मार्केट को कभी कुछ नहीं हुआ। इट्स गोइंग परफेक्ट। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है इस वक्त, तो वे आर नॉट। एंड नाउ व्हेन यू से इज इट अ गुड टाइम फॉर द ईयू सिटीजंस टू अप्लाई फॉर E2? ईयू सिटीजंस, अब ईयू में तो बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं। आप जिस कंट्री में है, यू नीड टू सी एंड कंपेयर कि आप जहां पे भी हैं यूरोप में, जिस भी कंट्री में, अगर आप ईस्टर्न यूरोप में है, सेंट्रल में है, नॉर्दर्न में है, जहां पे भी हैं, तो यू नीड टू कंपेयर दैट। अगर आप जर्मनी में बैठे हैं तो जर्मनी से अमेरिका की मूव, ऑफ कोर्स मेरे अभी लास्ट मे बी लाइक 6 मंथ्स में मेरे 2 केसेस जर्मनी से अप्रूव हुए हैं। मेरे पास इस वक्त इटली के क्लाइंट्स हैं, स्पेन के क्लाइंट्स हैं, जो हु आर स्पेनिश सिटीजन, इटालियंस, ये तमाम कंट्रीज के लोग दे आर कमिंग टू अमेरिका। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्कोप कि आपने करना क्या। अगर आपके पास कोई बिजनेस की का विजन है, कोई स्कोप है, एंड यू फील कि अमेरिका इज अ गुड मार्केट फॉर यू, देन अमेरिका इज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो ये तो डिपेंड करता है, when the people ask me what the current situation, there is no bad situation for small businesses. आपने 1 लाख $1.5 लाख का बिजनेस करना है, उस $1.5 लाख के बिजनेस से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है कि पॉलिटिकली क्या हो रहा है या इकोनॉमिकली कितना क्या सिचुएशन चल रही है। इट्स ऑल वंडरफुल, इट्स ऑल गुड। Do your own search, and if your business has a potential and you have a vision to enjoy or build up something big in America, then America is always a good place. गुरविंदर भाजी कहते हैं जी, हाउ मच शुड वी नीड टू इन्वेस्ट टू गेट E2 बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन? मेरे सब तो बड़े क्लाइंट ने जी, और कनाडा इचू तुसी भाजी 100 to 150 is minimum for everybody. Until and unless you come up with some extraordinary proposal कि यार तारे को you have some tech startup or something and you are good with the 50,000 and you can justify, then yes, it is fine. But generally majority of the times the 100+ investment is good. What if the business fails? Then the visa will be revoked. No visa will be revoked जी। जब E2 वीजा आपको मिल जाता है 5 साल के लिए, वीजा अगर आपको मिल गया फॉर एग्जांपल,
you are good for the 5 years. आपका business चाहे दूसरे महीने में, if the business fails, you shut down the business and or you sell it off or liquidate it or whatever, your visa is still valid for the 5 years. The problem will come in when after 5 years you are going for the renewal. Then you need to justify that what have you been doing, because आप business अगर नहीं कर रहे और 5 साल से अमेरिका में रह रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तो that becomes a challenge. But other than that, आपका renewal में problem आएगा, visa revoke नहीं होता जी. A crackdown on immigration. So crackdown on immigration, Anwar sahab, basically the crackdown is on illegal immigrations. सही है, it's not on immigration, it's on illegal immigration. तो जो unemployed undocumented population बैठी है फेक स्टूडेंट वीजाज लेके या अनडॉक्यूमेंटेशंस पे, फेक असाइलम्स पे, देयर इज अ क्रैकडाउन ऑन दैट. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके घर में अगर कोई बंदा रात को चोरी करने के लिए घुसे जाए, उसको भूख लगी हो, आपके किचन से खाना निकालने के लिए जाएगा, तो आप उसको बैठा के खाना खिलाओगे या डंडा मार के बाहर भेजोगे? Of course, this is how exactly the country works, right? तो अगर क्रैकडाउन चल रहा है तो क्रैकडाउन इज बेसिकली बिकॉज there are illegal immigrants or undocumented immigrants which are been there. तो उनकी वजह से हो रहा है. तो otherwise for the legal, आप E2 की बात कर रहे हो, you are coming as an investor. For investors, it's always a good time. Nobody kicks investors out. Every country, every person loves the investors. Thank you, Paji. And what state you recommend to start? Paji, I recommend only the top big states, the commercially big states, all the way from east to the west. You start from, for example, LA, New York, Texas, Florida, New Jersey, Washington, Virginia. Any of the big states is good to start. Don't go for the small states, not because of anything else, just because कि जो नवा बंदा जड़ा आंदा है और नवे बंदे को at least they should have some opportunities to grow big. Okay. Okay जी, शोएब साहब हैं जी. What business I need to can be without experience, especially for the job holders background? Any business जी, business देखो, जॉब होल्डर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, किसी ट्रेडिंग कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो देन दैट मींस यू हैव अ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यू कैन कम एंड डू द ट्रेडिंग. अगर आप डॉक्टर हो तो आप यहाँ पे आके कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. सो डिपेंडिंग किस तरह का बिजनेस आपने, किस तरह का जॉब आपने की है. और अभी लेटेस्ट मेरा एक क्लाइंट आया, ही हैज बीन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट उसका सारी पिछले 12-14 साल का पैशन था टू डू सम फूड बिजनेस. तो नाउ व्हेन द टाइम केम एंड देन ही वांटेड टू स्विच, ही जस्ट ओपन अप अ फूड ट्रक. ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पैशन एंड प्रोफेशन. आपका पास क्या एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू डू. ऑल ऑफ द बिजनेसेस आर गुड. What is the most difficult process from Pakistan? I heard opening a dollar account is a big deal and we cannot transfer money in one go. Yes, you cannot transfer money from Pakistan. That is one of the biggest challenge. There are multiple ways. You need to, every person's profile is different. We need to figure out what can be the best and most suitable option for somebody to, or either open an account or transfer the funds. अच्छा, जिनके मल्टीपल सवाल है ना जी, ये जैसे रहील साहब है या उस्मान है या व्हाटएवर, आई वुड से हॉप ऑन द कॉल. लिंक मौजूद है जी, फेसबुक पे भी लिंक पड़ा हुआ है, आप उस पे फेसबुक पे जाइए, लिंक पे ज्वाइन कीजिए, लेट्स हॉप ऑन द कॉल एंड डू द लाइव क्वेश्चन आंसर. दैट विल बी इवन बेटर, ताकि ये बार बार इतना लंबा आप टाइप करेंगे, मैं रीड करूंगा, उससे बेटर है कि लेट्स हॉप ऑन द कॉल. And it's a free call, so enjoy talking to me. Okay, so my brother is in Saudi Arabia, living there almost 1.5 years. He's on a work visa. Is better for apply for Saudi or Pakistan is better? And what is the timeline in both? कहीं से भी apply कर सकता है जी. अगर वो सऊदी में बैठा है, सऊदी का resident है, तो of course applying from Saudi is way better. Okay, जी, engineer Abbas Ahmed sir, I can buy Amazon wholesale US business, costed $50,000 for E2. जी बिल्कुल जी, Amazon account जो है वो qualify करता है E2 visa के लिए. Can father-in-law give money son's wife as I want to start my wife name? Yes, of course, father-in-law or father or brother or uncle, aunt, चाचा, मामा, कोई भी दे सकता है जी, कहीं से भी, as long as उनका अपना source of money जो है वो clear हो, then it should be good. MK है जी, do you take calls live of TikTok? Yeah, sure. As long as if it is a legitimate call, don't come for the the games and all. अगर आपकी question answer है तो yes, you can come on the live on the call on TikTok as well. Okay.
इफ योर E2 वीजा गेट रिजेक्टेड देन हाउ विल यू रिकवर इन्वेस्टमेंट? जी, E2 वीजा रिजेक्ट होता है तो आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहाँ पे थी? इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में थी, राइट? तो यू स्टिल ओन द बिजनेस, नाउ यू लिक्विडेट द बिजनेस, यू सेल इट ऑफ एंड यू कवर द मनी। आपका आप अपना बिजनेस सेल करें और पैसे बनाएं, पैसे आपने वापस निकाल लें। Atif SEO, if your E2 visa get rejected, what happened to our with our investment? या आपकी इन्वेस्टमेंट, I just answered it. आप अपने बिजनेस को सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं as long as you have a saleable business. I'm trying to call you as I have questions about S2. S2 नहीं जी, E2, yeah, okay. जी sure, M के साहब, join, send me the request. I'm not very tech savvy, तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे है, but if you can send me the request, I can accept you and put you on the call. Okay जी. Is there any website which give us a wait time for renewal of E2 visa? नहीं sir, there is no wait, there is no such website जी. हर और ये एम्बेसी जो है वो वेट टाइम मेंशन नहीं करती। B1 B2 के वेट टाइम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे, एक जेनरिक आपको आइडिया देने के लिए, बट देयर इज नो E2 वेट टाइम्स वेबसाइट। आफ्टर 5 years, if there is any stiff requirements of US citizens, job creation or renewal E2 visa, what is the common reason of renew rejection? There is no stiff requirements, but of course the whole concept of E2 is कि आप यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है? दो चीजों से होता है। नंबर वन, हाउ मच टैक्सेस आर यू पेइंग, एंड नंबर टू, what kind of job employments are you creating? तो जॉब एम्प्लॉयमेंट जब क्रिएट करने की बात आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक यू हैव टू स्पेंड लाइक 10 जॉब्स और 20 जॉब्स और व्हाटएवर, नहीं। आपने एक दो एम्प्लॉयज डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्रोसरी है तो ग्रोसरी में आपके दो एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय इज गुड एनफ। तो 5 साल में अगर आपके बिजनेस में दो एम्प्लॉयज हायर हो गए, यू आर गुड टू गो। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज को लेके बहुत सारे मैंने आई हैव सीन पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बट जनरली आई हैव सीन पीपल जो कंफ्यूज होते हैं, जी हम जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो क्या करेंगे, या अगर हमें अगर जॉब करनी है तो उसकी सैलरीज है, फॉर एग्जांपल वन यूएस लोकल गाय, इफ यू आर पेइंग हिम 50 60 70,000 अ ईयर, तो बंदे डर जाते हैं। यार आप अल्लाह के बंदो, आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि 5 साल का टाइम है। ईयर 1 पे आपको नहीं किसी ने बोला एम्प्लॉयज हायर करने को, और 5 साल में अगर आपका बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पैसे बना रहे हो, तो पैसे बना रहे हो तो जॉब हायर, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बंदा तो चाहिए ना। आप एक बंदा कितने काम करोगे? ठीक है, तो आपको तब भी बंदा चाहिए। और अगर बिजनेस चल रहा है, पैसे बन रहे हैं, बंदा हायर हो रहा है और वो अपनी सैलरी भी निकाल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप, आई मीन, इज इट लाइक यू डोंट इवन वांट टू स्पेंड द मनी? इवन अगर आपका बिजनेस ग्रो भी कर रहा है तो देन यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। तो आपको जब बिजनेस 5 साल ग्रो कर रहे हो, पैसे बना रहे हो, तो उसमें आप दो एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर लो, आपका बिजनेस मजीद ग्रो करेगा। इट्स वेरी सिंपल। If E2 visa rejected, what will happen? I just answered this question already 2 times. Okay. How much gas station cost in Texas Houston? और यार ये वाला जो बंदे होते हैं ना, इनको सल्यूट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इस क्वेश्चन को भी सल्यूट है। हाउ मच गैस स्टेशन कॉस्ट इन टेक्सास ह्यूस्टन? आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में करोला गाड़ी का क्या रेट है? तो आप मुझे ये प्लीज, आबिद साहब, आबिद हुसैन साहब, आपके पास जो आपका बिजनेस है, मुझे उस ये ना करोला गाड़ी का रेट बताइए पाकिस्तान में क्या है, फिर मैं आपको इसका ह्यूस्टन का जवाब देता हूँ। Okay, ji. If counselor processing reject the visa on same profile, can we do the change of status if having a B1 B2? Yes, of course you can do. Sultan Sahab, Assalamu alaikum sir from Faisalabad. Walaikum assalam, Sultan Sahab. Okay ji sir, I am Bilal Ganj. I am from Bilal Ganj, Lahore। अरे Bilal Ganj वाले सारे स्पेयर पार्ट्स वाले खोल के गड्डियां ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ। Okay, कैन यू आंसर द कॉल प्लीज? यार मेरे पास कॉल आ नहीं रही है मेरी जान। कहीं पे माय ब्रदर, कुड यू प्लीज आंसर द कॉल? मेरे पास कॉल आ नहीं रही है, आई डोंट नो। अगर आप एक काम कर लीजिए, मुझे आई एम नॉट एबल टू सी, नहीं मुझे रिक्वेस्ट नहीं आ रही। आप जो है वो उस पे चले जाइए यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे लिंक मौजूद है, तो आप डायरेक्टली मेरी लाइव कॉल को ज्वाइन कर लेंगे। E2 change of status, are we required to stay in the US for 2 years? E2 change of status means yes, you are staying in the US for 2 years, right?
I just call you as a guest from here. Okay, call now, ji. Let's see. I don't know. I'm not getting a call. E2 visa from US is better or Pakistan? बेटर कैसे होता है? बेटर का इस बेटर की डेफिनेशन थोड़ी सी बताइए जी. व्हाट डू यू मीन बाय बेटर? Better in what scenarios? What are the parameters of considering better or not better? What is the success rate ratio on E2 visa if I go with you? जी success ratio जो official USCIS का declared ratio है last year का वो 93% है जी E2 का, which is naturally one of the highest in any investor visa program. Same question, Abid sir, please answer. Abid ने क्या सवाल किया था भाई? वो I can't go back, so ask question. वाहिद साहब हैं जी. हेलो जी, हाय जी. Better in a sense to travel. If applied from USA, we are required for 2 years to stay in the country and cannot travel. Yes, of course. So if you देखिए अगर आपका traveling का purpose है तो of course then there is no betterment. Then E2 change of status is not an option for you. अगर if you need a travel, because अगर आपको travel करना है तो आप change of status नहीं करोगे, आप visa ही apply करोगे. Okay. Oh, sorry. Okay, I think I would be able. अब call कीजिए जी जिसने call करनी है. Hopefully. Okay. I think I got. Okay. हेलो. हेलो. हेलो जी सनी. सुन पा रहे सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया जी सर बोलो जी. एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था यहाँ पे B2 पे. ओके. उसमें और मेरी वाइफ के साथ मैं रिसेंटली मेरी बेबी हुआ यहाँ पे, तो मैं सोचा था कि B2 से E2 हम कर सकते हैं इंडियन वीजा पे. जी बिल्कुल. पासपोर्ट पे. किस पासपोर्ट पे? ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे? नो, इंडियन. नहीं, इंडियन में नहीं कर सकते. ओके, सो व्हाट विल अदर? नहीं, इंडियंस के लिए E2 है नहीं है. आपको जो है वो E2 E1 कोई भी इन्वेस्टर वीजा पे जाना है तो यू नीड टू हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट और एनी अदर कंट्रीज पासपोर्ट बेसिकली. EB2 वगैरह हो जाएगा? EB2 हो सकता है लेकिन EB2 इतना इट्स नॉट अ सो फास्ट प्रोसेस लाइक E2, तो वो इतनी जल्दी से नहीं होगा. तो कुछ और ऑप्शंस? उसके लिए आपको अटॉर्नीज को कंसल्ट करना पड़ेगा जी. आई एम नॉट इमिग्रेशन अटॉर्नी. Okay. No worries. I'm sorry. Thank you. I will graduate after 1 year, so I need to start the process now. And when I go back, I get the visa. Yes, you can. Sir, what is the success rate for your Canadian customers? Alhamdulillah, Canadian until now, I have not seen even a single rejection from the Canada. Every 100% is approval. Hello. Hello, can you hear me, brother? Yeah, I can. I'm a British citizen. There is an echo coming on your back. Do you want to take mobile off from the speaker? Hello? Yeah, okay. Okay, ji. Next, please. Okay. How long the E2 visa takes for processing from Pakistan? 3 to 4 months ji, on average. Okay, so $100,000. Can we get a gas station? Almost no जी. 100,000 में gas station नहीं मिलता. और ग्रोसरी स्टोर मिल सकती है, गैस स्टेशन नहीं मिलता. Sultan Ali, we really miss you. We were waiting your live session since long time. So thank you so much, Sultan. But usually I do not
I always try to get more on the lives, but I couldn't. But अभी तो मैं last week में आया था. I think last week में there was a session that was also very lengthy, long session. But anyway, thank you so much for your comments. Usman, what is the success ratio from Pakistan and how can we check how many cases got rejected? Usman, these kind of details are not available for available online, I would say. You need to do probably a deep research. You can go through the gazettes. USCIS issues the gazettes. Okay, तो आप अपने gazettes जो है वो I think quarterly और monthly gazettes भी होते हैं, quarterly and yearly भी. So go to the gazettes, find that where can you get those from, और उसके बाद आप उनकी जो है वो study करके then you need to figure it out. ज्यादा categorized breakdown तो नहीं मिलेगा, but general, for example, e-visa category में या E2 visa category में क्या, how many approvals are there, that you can find out from the USCIS gazettes. But उसके अलावा आपको जो किस business में है, कितने reject हुए हैं, क्यों reject हुए हैं, you will not be able to find those informations. Those are not publicly available. Shoaib Saab, if two partners, one from KSA, second from Pakistan, and if one of the reject, second partner can travel or not? It can travel, of course, but that is one of the the barrier of having a partnership. Is कि अगर किसी एक का प्रोफाइल या किसी भी रीजन से किसी एक का वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि वो ओवरऑल बिजनेस का वीजा रिजेक्ट कर दे, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि वन इंडिविजुअल इज गेटिंग रिजेक्टेड बट द सेकंड वन इज गेटिंग अप्रूव्ड. सो both options are possible. How check rejection is? That I have answered. $100,000, can we get a gas station or a grocery? I have already answered. Engineers are, sir, what will be the procedure from buying Amazon wholesale account? Cost it $50,000. जी, procedure remains same जी. आपको business कोई भी आप choose कर रहे हैं, procedure remains same. जब आप पहले बिजनेस को इवेल्युएट करोगे, फिर बिजनेस को बाय करोगे, फिर उसके बाद जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होंगी और उसके बाद आपका केस फाइल होगा. How long E2 visa takes to process from Canada? Canada currently, Rajvinder Nahal, I think is around 2 months, 1.5 to 2 months, 6-7 weeks, 8 weeks में Canada में process हो जाता है. I am 21 plus. My father, can I be the partner in E2? Yes, 21 years से ऊपर के जो है वो that can be partner. Hello. Hello. I think there is a problem with the line. Okay. If visa is not granted, will all the investment or money will be returned safely? जी, अगर आपका escrow में है money, तो yes, it will be returned safely. But if it is not escrow and you have actually spent the money in buying the business, तो फिर आपको business sale करके अपने पैसे वापस withdraw करने पड़ेंगे जी. So guys, understand, ये इस वीजा में आप you are not paying money to some consultants or middleman, right? I mean, आप किसी इंडिविजुअल को पैसे नहीं दे रहे, आप बिजनेस बाय कर रहे हो. आप जैसे ग्रोसरी पे जाते हो, आप कोई अपनी वेजिटेबल्स बाय करने के लिए, यू पे द मनी, यू बाय द वेजिटेबल. नाउ द वेजिटेबल्स बिलोंग्स टू यू. आपको घर, प्लॉट, गाड़ी, प्रॉपर्टी कुछ भी लेना होता है, आप जाते हो, पैसे देते हो, प्रॉपर्टी ऑन करते हो. जब ऑन करोगे तो वो ऑन करने के बाद आप उसकी वीजा एप्लीकेशन डालते हो. इसी तरह बिजनेस आपने परचेज किया, बिजनेस परचेज करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने वीजा एप्लीकेशन डाली. बिजनेस वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, यू स्टिल ऑन द बिजनेस. नोबडी इज गोना टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस. इट्स योर मनी, योर इन्वेस्टमेंट, योर ऑन बिजनेस. ठीक है, तो कोई भी बंदा आपके बिजनेस की गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी, श्योरिटी नहीं लेता. तो वो यू ऑन द बिजनेस. अब आप क्या करोगे अगर वर्स्ट केस में आपका वीजा नहीं लगा, आपने दोबारा ट्राई किया, रीसबमिट किया, नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, और आप कहते हो नहीं जी, अब आई वांट टू क्लोज द चैप्टर, तो आप बिजनेस को सेल करते हो. द वे यू बॉट द बिजनेस इन द बिगिनिंग, सेम आज आप खरीद रहे हो तो कल मार्केट में और भी बंदे बैठे हैं खरीदने के लिए, तो देन यू सेल इट ऑफ टू समबडी. Can we buy a digital or marketing agency in 50,000 and is it a good for E2 visa? Digital agency 50,000 में I don't know कहाँ से मिलेगी आपको, but अगर आपको कोई मिल जाए तो yes you can. Why not? Any active business is good.
There is no option to call you in there, brother. Okay. No, it's in the YouTube. There is a link. Just go on the top first comment. There is a link there. आप उस link पे click करेंगे, then you will join the call. Is USA better than Europe? अरे यार, ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है. ओके. इसमें बहुत सारे सिचुएशंस हैं जी, डिपेंड कर रहा है यूरोप कहाँ पे, नंबर 1, एंड व्हाट स्केल आर यू एट इन योर लाइफ, एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स. अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी टाइम्स द क्लाइंट्स कम्स टू मी फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और हेल्थ केयर बेनिफिट्स, ठीक है, स्टेट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. इफ योर ऑब्जेक्टिव इज कि आपको फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल मिल जाए, तो ऑफ कोर्स यूएस इज नॉट अ USA is not a place for you, because we are capitalist country, right? So we are not a social welfare country. So this is how you depend, कि आपके objectives क्या हैं. Okay. Yes, MK, how are you? I'm good, my brother. How are you? Good, sir. Thank you for It's been a long time I'm watching you, and all time follow you. Thank you, sir. I appreciate it. It was good chance to just catch up you now. I was asking you, I have a British passport and I visit few times to the US, and obviously the 90 days rules. I can't change my status over there in 90 days. Right, you are on ESTA. Yeah, but recently it's been a week. I decided to, rather than rely on ESTA, I changed it to B1, B2, and I got 10-year visa. Got you. So I got a restaurant over there, one obviously with somebody in partnership, and I bought it, and we bought another restaurant in Sacramento, and that's also in partnership. But other things I'm asking you, because the US asking legitimate way money, which is obviously I can't prove from England because of tax and other matter. But there's any chance if I go there and one of my old restaurants, which is already running, and there is around 8 or 9 employee, if I get gifted from my, if my the partner, if he gift that restaurant to me, will I get the visa? E2? No, the gifting the business is not permissible. Gifting the money is okay. If that partner or anybody else, for a matter of fact, even from UK or from USA, anybody give you the money as a gift or a loan, and then you use that money to buy the restaurant, is a legitimate transaction. But if he already owned the restaurant, he just signed up the papers that he is gifting you the restaurant, that would not be accepted for that. No, the things what I done good, I just signed, like a formal paper, like we do Pakistani people, like a desi system, but I didn't put any paperwork in the system. But I was trying to get either money from my younger brother, if he can transfer. I have a business bank account in America. I have $20,000-$30,000 as well. But if I get gift from my brother and I pay that money to my partner, and if he transfer the restaurant to me and I give him legit money. Yes, you can get a gift from your brother, but then we need to have the source of money from your brother also. Whoever he will give you. That's what he need to provide all the proof that where did he earn the money, and that did he pay the taxes on that money. As long as it's a tax declared money, anybody can give you the gift. Yeah, he got legit money. He will happy to give me that. And one more thing, shortly ask you. I don't want to waste your time. Sure. If I go there and spend 3 months, and I have 3 months more as well, a maximum 6 month limit on B1, B2. Can I put my status change that time, or I need to start process before, or I need to start after? Ideally, see, you need to see, there are two things. One is the starting process of the application of change of status, which is to put up the application into the USCIS. Okay, to the USCIS. Second is the process of gathering the documentation and the business and preparation of the whole visa application. So the visa application process that takes, or gathering of the documentations, that takes somewhere between 4 to 6 months time. So ideally, you would start before you come here, so that we can gather all the documentation. We make sure that every transaction, every month, business and everything is in line. And once you are here, then after 3 to 4 months, we submit the application for change of status. So there are two separate things. So you need to work parallelly with both. Okay.
and even I can get that portion of business as well, like a 51%, because the restaurant is quite 51% expensive. portion. Yes, absolutely. Because the restaurant is quite expensive. If I get all the money, it's gonna make maybe suspicious in it. It's more than like 300,000 restaurant. No, that's fine. You can have a 50% of the restaurant, and you should be good with it. Oh, okay, that's really kind if you appreciate. I will catch up soon. Okay, I will contact Sure, you. sir. Thank you. Appreciate it. Thank you. Okay, Sayed, I'm taking you on board. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने I-130 अप्लाई की थी मेरी बहन ने 2 साल पहले, तो अब उसमें मैं चाह रहा हूँ उसमें कौन सा क्विकेस्ट मेथड क्या होगा यूएस आने के लिए? क्या I-130 उसने जो है वो सिविलिंग के लिए अप्लाई की थी? जी हाँ, तो वो तो आपको अभी टाइम लगेगा ना, तो क्विकेस्ट जो है वो E2 या पैरेलली आप वो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसमें शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसमें उनको वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो उसमें एज अ क्या कुछ एग्रीमेंट हो सकता है कि इस तरीके से नहीं होता, उसमें प्रॉपर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। आप प्रॉपर आपका सोर्स ऑफ मनी होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट आई कहाँ से है, फिर वो मनी ट्रेल बनेंगे, पैसा अमेरिका में आएगा, एंड देन यू एक्चुअली बाय द बिजनेस। तो वो प्रॉपर लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस होंगी। यू नीड टू ईदर द सेम रेस्टोरेंट और एनी न्यू ब्रांच, न्यू थिंग इन द मार्केट, लेकिन आपको लेजिटिमेट जो है वो मनी ट्रेल्स एंड मनी फ्लो दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसमें अगर उनका रेस्टोरेंट उन्होंने जो सेटअप कॉस्ट की है अराउंड मेरे ख्याल से 30,000 बता रहे हैं डॉलर्स की है, और वो रन हो रहा है, वो चल रहा है, वो तो एलिजिबिलिटी बन जाएगी इस तरह से अगर मेरे पास इतना ही 30,000 की इन्वेस्टमेंट मैं करूं, भेजूं उनको? नहीं, 30,000 इन्वेस्टमेंट से नहीं बनेगा। आपको मिनिमम 1 लाख से ऊपर ही करना है। आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 मिनिमम। ठीक 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 ठीक। अच्छा, वैसे आपको आइडिया है कि I-130 में कितना अरसा लग रहा होता है आजकल? मुझे मैं आई एम नॉट अटॉर्नी, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट जो हम देखते हैं डे टू डे में 18 साल लगते हैं। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू थैंक यू। Mr. Tahir, taking you on board. Yeah, brother, how are you? Good, sir. How are you? Where are you calling from? Good. No, Dubai. अरे दुबई, माशाल्लाह, मेरी पुरानी महबूबा। अच्छा, हाँ सही है सही है। तो आप दुबई आते रहते हैं? मैं दुबई आता रहता हूँ जी। मैं दुबई पहले 14 years of my life मैं दुबई में ही रहा हूँ, तो that's why I Wow, said amazing. Dubai is my Dubai is the best place in the world to live in. very place. Absolutely. Amazing, amazing. As long as you have a Western passport, then Dubai is the best place to live in. Exactly. बस अच्छा, ग्रीन तो कार्ड में नहीं रहिए, उधर बहुत मार पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। Anyway, the reason I'm calling you, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे E2 वीजा है, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, if you start up a new company and have a very good business plan and you transfer the funds from Dubai to US entity, राइट, तो उसकी बेस पे अप्लाई हो सकता है। और सेकेंडली ये कि एक इटालियन नेशनल और एक पाकिस्तानी नेशनल, तो बोथ कैन पार्टनर अप एंड अप्लाई, दोनों ही दुबई में है और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है 20 साल। नहीं, पार्टनर जो है वो सिमिलर सिटीजन होना जरूरी है। इधर बोथ इटालियंस और बोथ पाकिस्तानी, तो दोनों का पार्टनर सेम सिटीजन होना जरूरी है। और बाकी जो बिजनेस का आपका क्वेश्चन है, you have a great business plan, you invest the same reasonable substantial money, you of course it can work for you too. अच्छा, तो इन दिस केस जो है मेरे पास इटालियन भी है और पाकिस्तानी भी है, तो इस सूरत में आई कैन अप्लाई ऑन थ्रू पाकिस्तानी पासपोर्ट, दोनों फिर पाकिस्तानी हो जाएंगे। तो जो इमिग्रेशन कंसिडरेशन है वो सेम ही है फॉर ऑल E2 regardless of if you're European passport or Pakistani passport? Not at all. Everything remains same. Everything remains same. Most of the time people come and ask, oh, yeah, I'm Canadian, तो मेरे लिए क्या है? I'm a Canadian, UK, Australia, Europe, wherever you are, E2 procedures remain same. तो दुबई से कितनी टाइमलाइन है from start to finish? Almost कितनी? 3 to 4 months. 3 to 4 months after the application submitted. Yes, after the submission, absolutely. So steps इसके यही हैं कि to set up entity, then transfer 100,000, and then submit the business plan and all that, right? After transferring the funds, then you need to spend the funds too.
You need to make the necessary investments. The funds sitting in the bank account is not considered investment for E2 purposes. So the funds, Okay. you transfer the funds, then the funds should be executed and invested into whatever the business plan you have. Acha, so when the whole 100,000 invested, then only you're eligible. Right, absolutely. The money has to be Right? Not invested. Only sitting in the bank does not qualify. okay. So that's why you suggest acquiring a business rather than by Not starting a necessarily. business. No, I suggest starting business is more than acquiring. In fact, मेरे practical practice में भी जो है वो I have established new businesses more than acquiring existing businesses. So that's not a challenge. I mean, you can definitely start something new. The goal is to spend the money. Whether you are buying a business or you are starting a new, but the goal is to spend the money. And this money, for example, let's assume we have an entity because I have quite a large business in Dubai. So usme hum agar I transfer 100,000 and then we transfer the money offshore, paying salaries, marketing services, website services. So Surat mein we can spend that money or it needs to be spent the majority in US. Okay, so ideally you can spend anywhere. I mean, as per the legal language, but currently because of the latest administration, there is a rule called buy American and hire American. So we prefer the E2 investment amount should be spent locally in the country. Actually, basically, I do consulting like you, so I don't know. I'm not sure where I'm gonna spend the money. So I mean, that's the issue. trust me, I have worked with hundreds of IT professionals and consultants, which started with the same concept that, oh, like I just need a laptop and my all the backend team is sitting in back home or wherever, and I don't need to spend the money. And then eventually we end up spending more than $100,000, and at the end of the transactions we were squeezing up that, okay, oh, we are out of the money, so we can't spend more now, we are done. Okay, and So this money can be invested on buying a property or no? no, buying property is No. not an investment. No. Vehicles, cars, Vehicle any as assets which can be liquidated in case the of visa course, if you application is if not you if you successful. select the business which is an asset backed business, yeah, that would be a good strategy. So if you want to buy Mhm. vehicles, then even on my channel, I have like probably a lot of videos on the vehicle related businesses. You are based in Dubai, you can buy vehicles for the car import business. I have probably 5-7 videos on that. You can do the car rental business, you can do the car workshops, you can No, do no, the I just wanna do what I do. I don't want to change the field. I Yeah, was so just then in thinking that maybe case, I can buy in that a couple case, of if vehicles that for business sales needs a team or vehicle, if the business for needs a sales. vehicle, for example, if you are having a cleaning company and you need to transport your employees, or a contracting Uh-huh. company and you need to transport your employees, you can buy a vehicle as a business investment. But if you have a Mm. consulting company, then you don't need a vehicle practically, So Okay, and in the meantime, if I come on my that online approval and I can manage my business in the meantime while I don't have E2 no, you if I cannot. come for 3 months. No, you can only own the business, but you cannot work and operate the business. Okay, so it has to be a local employee over there. It has to be local, right? If the Okay, business right. needs to start operations, then there has to be a local employee on board. And the local employee for a new entity hiring if the is not a mandatory, right? No, it's not mandatory. Yet in the company, but still it makes you eligible for E2 visa. Right. Correct. Okay, cool. So let's have a chat. And would you be able to help with this? Oh, absolutely. I mean, why not? Okay, how can I book a call with you? I think there will be the link in the description. Okay, I'll find it. I'll find it. Yeah. No worries. If you Okay. don't So find it, I thank you. mean, even on the screen also you could see the WhatsApp number or even the board line number. I So will I will find it from your website. No worries. No worries. thank Thank you. Thank you so much. you. Thank you a lot. Bye. Great. So good, guys. I mean, that's a good way of getting your questions answered. It's far better than typing. Hello, brother. Hello, brother. Hi, hi, hi. I have B1, B2. Yes. Well, congratulations if you have B1, B2. And okay. How can I contact you? You can just go to the link and book a consultation. Talk to me. Okay, जी यहाँ से अब देख लेते हैं जी where we missed the okay.
मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शंस फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स है। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए जो सबसे कॉमन रीजन है वो इनके जुगाड़ है जी। आप जुगाड़ लगाना छोड़ दो, वीजा अप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। जुगाड़ से मुराद है कोई ना कोई शॉर्टकट, कोई ना कोई देसी तरीका, देसी वारदात। मेरी खाला चाचे मोहम्मे का लड़का है, उसका बिजनेस है, वो बिजनेस मेरे नाम पे डाल देगा, हम पैसे शो करा देंगे, ये कर देंगे। या सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर नहीं है, पैसे जो है वो टैक्स डिक्लेयर नहीं किया हुआ, इस तरह के मामला हैं जी। आई मीन यू स्टॉप डूइंग दैट, योर वीजा अप्रूवल रेशियो विल बी हाई। If the visa is not guaranteed with all the investments or the money be returned safely, I have already answered this question couple of times in this call only. Can we buy digital marketing agency in 50,000? जी बिल्कुल जी, आप you can buy. I have answered this also. There is no option to call you here, brother. No, there is यार, ऐसे नहीं करो। How much time will it take to open LLC and transferring money and opening bank account? How much you take for this? Opening LLC is depending on the state to state, but 3 to 5 days in general. Getting the EIN 6 to 8 weeks. Opening a bank account 1 week. All in all, you're talking about 7-8 weeks, 10 weeks, somewhere in that time. Okay. Better in for the business and the old age living. Oh, okay. If you are referring to the same thing, which is better? The better for the business, of course, there is no place on the planet better than America for doing a business exclusively, solely if the purpose is to do the business and grow. I have done business in Middle East, I have done business in Pakistan, I have done in Europe, I have done in multiple countries. I don't find, at least for me, for my scope, I don't find any place better than America. But if you talk about the old age living, so depending old age living, if you have money and you want to live again America, or even then old age living, so it can be anywhere. I mean, go to Dubai and enjoy the Dubai lifestyle, why not, to be very honest. But if you want to depend old age living with the state provided, state funded medical programs and the old age programs, then go to Europe. Don't bring old age people to America without insurances or without having a proper source of money. I mean, it can get very bad. I think US is a lot better than Europe or UK because I'm a UK national. Again, I just answered, for the business purposes, for a capitalist market, capitalist approach, no way better than America. But if you have other objectives, free education, free medical, free lifestyle, then this might not be a good place. स्टेटस चेंज में भी रिजेक्शंस का चांस है। ऑफ कोर्स सर, देखिए हर उस चीज में रिजेक्शन का चांस है जहां से आपको अप्रूवल चाहिए। अगर रिजेक्शन का चांस नहीं हो तो देन व्हाई डू यू नीड अप्रूवल? देन यू जस्ट पिट अप द बिजनेस एंड आप जाओ और किसी जाके मशीन से जाके वीजा स्टैंप करवा लो। सो वेयरएवर देयर इज एन अप्रूवल, देयर इज अ रिजेक्शन चांस। मोहम्मद यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। राहिल भाई, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई, इफ एनी बिजनेस नॉट डूइंग गुड, कैन आई चेंज माय बिजनेस? जी बिल्कुल, यू कैन चेंज द बिजनेस। कैन बाइंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग टैक्स प्रिपरेशन बिजनेस क्वालिफाइज? यस, इट क्वालिफाइज। Most common reasons for rejections for Pakistani nationals, I just answered, for this one. If a person have pending asylum status in USA, can he apply for E2, and how long the process will take as he is already in the USA? Pending asylum case needs an evaluation. जी, उस पे पता चलना चाहिए कि what state, what situation it is at. So the best would be to book a consultation with an immigration attorney, and then he can guide you properly. Hi, you can add me on call. Okay, I did. Okay, guys, so that's a great session. I think I would just, try to sum it up, wrap up the call, and you guys been so good audience. I hope आप लोगों के काफी सारी चीजें, questions answer हो गए होंगे. And if you have, I'll take like maybe 1 or 2 minutes more, and then we should be good to go. So as a E2 business owner, you cannot run the day-to-day operations of the business. No, E2 business owners can run the operations. Of course, why not? E2 business owners has to run the operations, but until E2 is approved, then you cannot run. मतलब होता ही है कि जब आपने if you are buying a business, आपको ग्रोसरी पसंद आई, लोग B1 B2 पे आए और आके जी हम बिजनेस खरीदने लगे, हमने एप्लीकेशन डालनी है, and you start taking over the business and start operating the business.
वो अलाउ नहीं है जब तक E2 अप्रूव नहीं हो जाता. Once E2 is approved, then you can done. सर मेरा वीजा प्रोसेस करवा दें, काइंडली रेफर टू योर पर्सन टू ट्रीट मी नाइसली. जी जरूर सर, नाइसली ट्रीट करेंगे जी, नो प्रॉब्लम, अल्लाह खैर करे. बाकी वीजा हमने नहीं प्रोसेस कराना जी, वीजा तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेस कराना है. हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कनेक्ट विद माय टीम एंड वी विल गेट इट डन. How much your cost as a consultant? I basically charge different fees based on the business models, business natures and all. So depends कि आपको क्या चाहिए. Based on those, we can work it out. तो आप appointment book कर लीजिए. मेरी consultation fees है $250 for a consultation. You can book it, and then we can jump on a call. We can see what kind of support and service you need, and based on that we can coach you. Thank you so much, brother. You welcome, sir. No problem. Okay, I-130 for parents. How long it take? I-130 takes long time. Gee, I'm not the right person for I-130. Okay. Last comment. Hopefully, yeah. What are the few states you recommend with more success rate of E2 applicants or small businesses? देखो E2 applicants का states के साथ कोई relative connection नहीं है. E2 works for entire 50 states wherever you want to go. But as a new investor, new person, new migrant to the country, I recommend the few top line commercial states. I already answered in this video. Some of the big states you should be good to start the business. Excuse me. Just don't go for the small states or the small towns, because that will limit your opportunities to grow and learn about the businesses here. All right, guys. So I think that's all for now. And thank you so much for being a good audience. And it was really a wonderful session. Hope I answered, a couple of your questions. And that will give you some good idea, good roadmap to work it out. Further, if you wanted to have any more discussions, go to my channels, hop around on the different videos, different content. Everything is available online. You want to talk to me, book a consultation, we can have a discussion. Thank you so much. Assalamu alaikum. Have a good day, ji.